मेरा नाम डॉक्टर ताहिर हाशमी है और मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है ऑनलाइन ये मास्टर क्लास का। डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह ने सब कुछ बता दिया है, ये सेट द सीन। तो हम स्टार्ट करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस को। तो रूमेटोलॉजी समटाइम्स इज इक्वेटेड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज आवर ब्रेड एंड बटर। तो एवरी रूमेटोलॉजिस्ट शुड बी वेरी well versed in management of rheumatoid arthritis. You can send the questions online and I will try to answer them at the end. अच्छा, so management of arthritis has been difficult and notorious. ये बहुत पुरानी ज़माने की बात है कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स को मैनेज करना हमेशा से मुश्किल रहा है, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। तो इसलिए आई हैव टर्म्ड माय प्रेजेंटेशन एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन 21st century. तो सर विलियम ऑस्लर वाज ए वेरी फेमस फिजिशियन. Even he had problem dealing with arthritis of the patients, arthritis patients. तो उसका कोट है कि जब आप पेशेंट को देखें कि आर्थराइटिस वाला पेशेंट आ रहा है तो फिर आप किसी और दरवाजे से कमरे से निकल जाएं. तो आजकल ऐसा नहीं होता. तो आजकल हम कमरे में ही रहते हैं और मैनेज करते हैं और बहुत अच्छा मैनेज हो जाता है. तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद अ फ्यू केसेस टू सेट द सीन. तो हम देखेंगे कि लास्ट सेंचुरी में अराउंड 30 years ago हाउ वाज रूमेटॉइड आर्थराइटिस मैनेज्ड एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर द टर्न ऑफ द सेंचुरी. तो एक 30 years फीमेल है. शी इज हैविंग पेन एंड अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस फॉर 1 year और शी हैज बीन टेकिंग पेन किलर्स ऑफ एंड ऑन. उसने रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाया तो शी हैड रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव एंड शी हैड 4 swollen joints. तो she was given only NSAIDs and she was managed only on NSAIDs for a year until she developed overt polyarthritis. उसके सारे जोड़ सूज गए. तो then she was started on steroids in addition to NSAIDs. और उसको बताया गया कि आपने रेस्ट करना है और फिजियोथेरेपी करनी है. और उसके एक्सरे कराए गए तो एक्सरे पे इरोजन्स नहीं थी. तो उस वक्त रूमेटोलॉजिस्ट ने कहा आज से 30 years ago कि आपको किसी बीमार की जरूरत नहीं है, बस पेन किलर्स खाएं, स्टेरॉइड्स लें, फिजियोथेरेपी कराएं और जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस ना डालें ज्यादा. तो उसके जॉइंट्स जो है ना मल्टीपल ओकेजन्स पे इंजेक्ट भी हुए, स्पेशली द नीज. उसके बाद क्योंकि वो शी वाज ऑन रेगुलर स्टेरॉइड्स तो वो कुशिंगॉइड हो गई, ओबीस हो गई. अच्छा, फिर 4 साल के बाद उसके एक्सरे हर साल होते थे तो उसके इरोजन्स डिटेक्ट हो गई आफ्टर 4 years. और उस टाइम पे जो है ना उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे स्टार्ट किया गया बिकॉज एट दैट टाइम यू कुड नॉट बी स्टार्टेड ऑन डीमार्ट्स थेरेपी अंटिल यू डेवलप इरोजन्स. तो उससे उसको फायदा नहीं हुआ. फिर उन्होंने कहा चलो जी अब इसको सल्फासालाजीन पे स्टार्ट करते हैं. फिर उससे फायदा नहीं हुआ. तो फिर जब ये दोनों फेल हो गए तो उन्होंने कहा चलो अब मेथोट्रेक्सेट पे स्टार्ट करें. तो बाय दैट टाइम बेसिकली लॉट ऑफ डैमेज हैड बीन डन. तो उससे फिर थोड़ा सा ही फायदा हुआ पेशेंट को. लेकिन फिर क्या हुआ, बिकॉज ऑफ ऑल द एनएसएइड्स, स्टेरॉइड्स, तो पेशेंट को हाइपरटेंशन डेवलप हो गई एंड देन शी वाज हैविंग डिस्पेप्सिया एंड देन शी डेवलप्ड डायबिटीज एंड बिकॉज ऑफ लॉन्ग term steroids उसको osteoporosis भी हो गया and she fractured her wrist and she also developed cataracts. Or of course after all these years because of uncontrolled rheumatoid arthritis तो उसको she developed secondary osteoarthritis in the knees and established deformities. Or of course she was advised to have knee replacement surgery. So ये management आपने देखी कि how we used to manage rheumatoid arthritis around 30-40 years ago, but things have not changed. अभी देखें कि अभी क्या होता है. Just a case from 2019, 30 years female, she is having pain and swelling and early morning stiffness in hands, feet, shoulders for last 3 months. And she gets problem in opening the taps in the morning, preparing breakfast, looking after the children. Or on examination, she had reduced grip and synovitis in the MCP joints with some stiffness in the shoulders and also pain in the MTPs which were sore. उसकी ESR 50 थी, माइल्ड एनीमिया था और रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी-CCP पॉजिटिव. सो इस स्टेज पे शी वाज गिवन इंट्रामस्कुलर स्टेरॉइड्स एंड low dose oral steroids and NSAIDs as a bridging therapy, and she was started on combination DMARD therapy straight away, methotrexate or hydroxychloroquine के ऊपर. And later on when she did not respond fully to these 2 DMARDs, a 3rd DMARD was added. So she actually got better, but she was unable to taper the steroids and anti-inflammatories. So she was starting on biologics. जब biologics पे उसको start किया गया तो she became much better और her disease activity went down.
तो उसके स्टेरॉइड्स और एनएसिड्स पे स्टॉप कर दिया गया, बिकॉज वी डोंट वांट टू गिव स्टेरॉइड्स एंड एनएसिड्स टू द पेशेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म बिकॉज ऑफ देयर एडवर्स इफेक्ट्स. And later on, when she remained in low disease activity and rather remission, तो फिर उसके HCQ और sulfasalazine भी stop कर दिया गया. And she is maintained on biologic therapy along with methotrexate with very good control of the disease. तो देखा आपने कि how things have changed over the last 30 years. We are more aggressive now and we want to get the disease activity fully under control. We just don't want to make the patient a little bit pain-free. We want them to stay active and not have side effects of the medication and remain fully active and participating in their daily life and continue their jobs, their all activities, layer activities and everything. So what is rheumatoid arthritis? So it's a chronic multi-system autoimmune inflammatory disease, basically which leads to synovitis in the joints with resultant cartilage destruction, bone erosions, joint deformity and disability if not treated. So a little bit of history. In Europe, actually, rheumatoid arthritis was not very common before the 17th century. And the first case which looks like rheumatoid arthritis was described by a French physician. And the term rheumatoid arthritis was coined by a British physician, Dr. Alfred Garrod, in 1860. So a little bit about the etiology and pathogenesis. So one has to have some genetic and environmental risk factors, which over time lead to development of the autoimmunity. And autoimmunity leads to development of the antibodies. And there is a stage in which patient has got only aches and pains and there is no overt synovitis to be detected. And then it develops into unclassified arthritis and then full-blown rheumatoid arthritis. So patients can have positive antibodies well before the development of the overt symptoms and overt swelling of the joints. And this time period can be from months to years. Some people can have positive antibodies like even 5 to 10 years before they developed a rheumatoid arthritis. And over here, you will see that there is a healthy knee joint and there is a knee joint which is involved with rheumatoid arthritis. And in rheumatoid arthritis, there is synovial hyperproliferation. The synovial membrane hai, that becomes invaded by the inflammatory cells, जिसमें macrophages होते हैं, और there is fibroblast activation and there is angioneogenesis के उसके अंदर vascularity बहुत ज़्यादा होती है, and then there are B cells and T cells involved. So a lot of inflammatory cells are involved. And that all leads to inflammatory cytokines in the joints, which are like TNF-alpha, IL-6. And this all leads to swelling in the joint and bony erosions, because osteoclasts are also activated and they lead to bony erosions. So over here, you can see that in early rheumatoid arthritis, there is only swelling of the joints and there is no deformity. And then if it remains untreated, then you start developing deformities. And in late rheumatoid arthritis, you develop all the classical deformities of rheumatoid arthritis. So over here, you see the classical deformities like swan neck deformity and the boutonniere deformity and Z deformity of the thumb, and ulnar subluxation in late untreated rheumatoid arthritis. Over here, you can see that this patient has been treated with a lot of steroids, with thinning of the skin and bruising of the skin. And patient who are not treated well or have got very active disease, they develop rheumatoid nodules along the elbows and in the feet and hands as well. And in the X-ray, typical findings on the X-ray are periarticular osteopenia and the marginal erosions. And they are seen in the MCP and PIP joints of the hands and feet mainly. And this used to be the case in last century, because more or less every patient who developed rheumatoid arthritis used to end up in wheelchair because the treatment was not good. तो अभी तक भी ये परसेप्शन है लोगों में कि अगर मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया तो क्या मैं व्हीलचेयर बाउंड हो जाऊंगा, तो अभी तक परसेप्शन है. लेकिन होपफुली इफ समवन गेट्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस
at this time of the century and we treat them well, they won't end up in wheelchair. So rheumatoid arthritis जो है एक systemic disease है, but mainly it affects the joints. But if you don't treat it well, that it can affect many other joints as well. So इसमें सबसे जो common चीजें हम देखते हैं उसमें secondary Sjogren syndrome है, and anemia होता है, and rheumatoid nodules, although any organ can be affected. So पिछली century में we will see that how the medications, various drugs were developed. So around 1900, aspirin was discovered and made, and it was being used in joint pains. So at that time, we didn't have much in terms of treatment options. And later on, then the gold was started in the treatment of rheumatoid arthritis. Actually, at that time, gold was used to treat TB as well. And because rheumatoid arthritis initially was thought to be secondary to TB. So gold was started in the treatment and it actually worked to some extent. And then corticosteroids came, and then penicillamine and NSAIDs came around in 1970s. So in over here, as I mentioned, that there used to be a gold era when gold was the most commonly used DMARD therapy or treatment for rheumatoid arthritis. And in 1970s and 80s, it was the most commonly used DMARD. And there used to be gold clinics in the Western world, but it definitely came with its toxicity. So not everyone could be continued on gold long term. In the last century, we were using mainly NSAIDs and steroids, and DMARDs were started very late, only when the disease became erosive. And only one DMARD was used at a time. Most of you will remember this 1987 American classification criteria, which had 7 components in it. And you were diagnosed as having rheumatoid arthritis if you had almost 4 of these and you had symptoms for more than 6 weeks. ये वाला जो criteria था, actually this detected the rheumatoid arthritis in a very late stages, and diagnosis of rheumatoid arthritis was delayed if we used this criteria. So this has been revised. So अब क्या हो गया है? Since the turn of the century, things have changed dramatically, and there has been a paradigm shift both in diagnosis and treatment. And now our aim is to diagnose the patient early and treat them early and treat them to target. And we want to aim for remission or low disease activity in the joints. And we are using the new new class of medications, which are called biologic drugs. And we want to get the patients early to our clinic. So we need to make sure that general practitioners ko pata hai, medical specialists ko pata hai, कि what are the symptoms of early rheumatoid arthritis, ताकि वो इसको detect करें and they then refer the patient to the rheumatologist. So these are the 3 S's which you need to remember. कि the patients who have got rheumatoid arthritis or any early inflammatory arthritis, they will complain of stiffness. उनके joint stiff होंगे morning में 30 मिनट या उससे ज्यादा के लिए, उनकी जो है swelling होगी किसी joint में, और अगर उनका आप MCP joints, ये जो knuckles हैं, अगर आप उनको squeeze करेंगे ऐसे तो उनको pain होना चाहिए. तो अगर ये 3 symptoms किसी के अंदर हैं तो they should be referred to a rheumatologist, because this could be rheumatoid arthritis or arthritis, inflammatory arthritis of other rheumatic diseases. So MCP squeeze test, it is very sensitive. It's not very specific. Lot of, but this is a very good test. If someone is having symptoms like early morning stiffness and you squeeze their MCPs, their knuckles, and they complain of pain, and then they should be referred to a rheumatologist. So diagnose early करने के लिए what we need to do. Of course, history is very important and examination is very important. But of course, you need help of the tests as well. So now we have got more sensitive and specific tests which can tell us about that some patient who is having joint pains may be having rheumatoid arthritis.
So this test is called anti-CCP, which is against a particular protein in the body. And this test has got a sensitivity of around 70%, but it is quite specific. So if someone is having anti-CCP antibodies positive, they are most likely having rheumatoid arthritis. Although it's not very sensitive, not every patient with rheumatoid will have this. And this antibody can be present in the blood even well before the onset of the disease. And if someone has got anti-CCP in the blood positive, then they need to be treated aggressively, क्योंकि ये एक poor prognostic factor है. And now we have got ultrasound. Ultrasound is now being used very commonly, especially in the Western world, to diagnose early rheumatoid arthritis. इसके several advantages हैं कि इसमें कोई radiation नहीं है, quick है. Patient feels very satisfied कि उसके सारे joints को देख लिया गया है. But of course, इसके लिए जो है ना expertise होनी चाहिए. We should be having someone, either a rheumatologist or a radiologist, who is interested in doing musculoskeletal ultrasound, because this is a different specialty. और जल्दी diagnose करने के लिए, of course, we need to change the classification criteria ताकि we detect the early patients and diagnose them at early stage. So now the classification criteria have been changed, and the focus of these criteria is to diagnose them early. So there are 4 domains in this classification criteria, which which came out in 2010. Depending on the number of joints and the whether they are small or large joints, they are given a particular a number. And if there are small joints involved, then you get more marks. और अगर large joints हैं, you get low marks. और serology उसमें include की गई है rheumatoid factor और anti-CCP को, दोनों को, क्योंकि पहले वाले classification criteria में anti-CCP antibodies नहीं थी. Symptoms were there in the old classification criteria, लेकिन उसमें ESR और CRP नहीं थे. और you have to keep in mind कि you will apply these classification criteria if you think that there is no other particular reason for any inflamed joint. अगर किसी को clear cut gout लग रहा है, तो you will not apply these criteria. And these can be applied prospectively and retrospectively as well. So this is a slide which shows the historical development of various drugs in the rheumatology. अच्छा, as I mentioned कि अब हम पहले करते हैं कि diagnose early करना है, treat early करना है, and then we are planning to treat to target के हर patient को हम जो है वो treat to target करें. और we got the evidence from this TOCORA trial, जिसमें there were 2 groups. एक group को जो है ना उन्होंने routine care दी और दूसरे patient को intensive care दी. Intensive care ये थी कि they made a plan कि we want to get these patients into remission or low disease activity. तो उसका एक practical protocol होता है कि you have to examine all the joints, you have to see how many joints are tender, how many are swollen, और PSR और CRP क्या है, और how is the patient feeling. तो उन्होंने देखा कि if you apply the intensive protocol, then more patients get better. ACR 20 and 70, ये basically 20% improvement है, 70% improve है, और remission ये है कि there is a particular criteria for that to diagnose someone in the remission. तो उन्होंने देखा कि if you treat them aggressively, then you get more patients into remission. और आजकल ये हमारा प्रोटोकॉल होता है कि we want to get every patient into remission or low disease activity. तो क्या होता है कि अगर किसी को active rheumatoid arthritis है, तो हम उनको DMARDs पे स्टार्ट करते हैं, और अगर पेशेंट रिमिशन में चला जाता है तो वेल एंड गुड, हम वी वांट टू कीप देम इनटू रिमिशन. अदरवाइज वी गेट देम इनटू लो डिजीज एक्टिविटी, और अगर लो डिजीज एक्टिविटी के बाद डिपेंड करता है कि वी कैन स्टार्ट देम ऑन बायोलॉजिक थेरेपी एज वेल, और वी कैन ऐड मोर DMARD थेरेपी. तो वी वांट एवरीवन टू गेट लो डिजीज एक्टिविटी और रिमिशन एंड स्टे इन दैट स्टेज. Or now we have got these biologic drugs, which I mentioned, which are the game changers, and they have been termed as wonder drugs as well. So ये targeted treatments हैं, which are genetically engineered proteins, और ये specifically target करती हैं inflammatory response, inflammatory जो components हैं हमारे joints के अंदर, और which are responsible for the rheumatoid arthritis, like TNF-alpha, IL-6, and B cells. तो ये उनको target करके control करती हैं disease को.
तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है which is activating the T cell, and then T cell is activating the B cell and macrophages. तो आप देख रहे हैं कि there are several areas where we can target the inflammation cascade. So we have got now TNF alpha inhibitors, IL-6 inhibitor, and B cell depleting therapy, and the therapy which affects on the T cells. So these are the anti-TNF therapies, and out of these, Enbrel is available in Pakistan. The response is better when you combine them with methotrexate. And another treatment which is available in Pakistan is called rituximab, which which targets the B cells. And another therapy which is called tocilizumab is also available in Pakistan, which targets IL-6 inhibitors. And there are now oral therapies as well, which are very effective, like which are JAK kinase inhibitor, which affect the basically intracellular proteins. But all these therapies are very expensive. सो क्या करें कि पाकिस्तान तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ये एक्सपेंसिव थेरेपीज, तो वी हैव गॉट स्टडी, एक ईयर स्टडी इन विच बायोलॉजिक थेरेपी एंड मेथोट्रेक्सेट वाज कंपेयर्ड विद ट्रिपल डीमार्ट थेरेपी, जो हम कन्वेंशनल डीमार्ट यूज करते हैं, 3 डीमार्ट्स को यूज किया गया। तो उन्होंने देखा कि इफ यू यूज द ट्रिपल डीमार्ट थेरेपी appropriately, then it's almost equivalent to the biologic therapy. So this is a style which is followed in UK where I trained for in rheumatology. तो वहाँ पे patient को अगर कोई symptoms हैं joints के, तो patient is going to see the GP, and GP will do basic baseline test with immunology. और अगर if any test is positive, the patient will be referred to the early arthritis clinic. Even if the tests are not positive but the symptoms are classical, patient will be referred to rheumatology clinic. And over there, they will have ultrasound if there is no inflammation in the joints on naked eye examination, and they will be started on steroids and DMARS. और वो हर महीने देखा जाएगा, उनको ट्रीटमेंट एडजस्ट की जाएगी, और अगर वो बेहतर नहीं होते तो उनको बायोलॉजिक्स पे स्टार्ट किया जाएगा। पाकिस्तान में बड़ा मसला ये है कि एक तो पेशेंट फाइंड इट वेरी हार्ड टू कम टू टर्म्स विद द डायग्नोसिस ऑफ ए लॉन्ग टर्म डिजीज, और वो चाहते हैं कि बहुत ही कोई जल्दी से इलाज हो जाए और लंबी दवाई ना खानी पड़े। तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है कि कंप्लाइंस नहीं है। तो ये सबसे बड़ा, अगर पेशेंट कंप्लाइंट हो तो पेशेंट डू वेरी वेल एक्चुअली। और ज़ाहिर पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, पेशेंट्स आर नॉट वेरी वेल ऑफ, तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। तो टेक होम मैसेजेस ये हैं कि थिंग्स हैव चेंज्ड, RA is now a remissionable disease and it can be tightly controlled like blood pressure and diabetes. और combination जो DMARDs हैं, almost it is as effective as biologics if used appropriately. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डायग्नोज अर्ली करना है और अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन है कि मोहम्मद जियाउर रहमान ने पूछा है कि हाउ टू मॉनिटर द RA प्रोग्रेशन रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। तो इसके लिए ऑफ कोर्स पेशेंट विल टेल यू कि आई एम फीलिंग बेटर और नॉट, inflammatory markers will tell you, और हमारे पास होता है एक DAS28 score which is called disease activity score of 28 joints. So you can Google it. तो उसमें 28 जॉइंट्स हैं, उनको हम देखते हैं कि वो टेंडर हैं और स्वोलन है या नहीं है, व्हाट इज द ESR और व्हाट इज द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग के उसकी डिजीज कितनी बेहतर हुई है। अगर इनको हम कंबाइन करें तो वी गेट अ स्कोर व्हिच टेल्स अस दैट डिजीज इज एक्टिव, मॉडरेटली एक्टिव या लो डिजीज एक्टिविटी। तो हम उसको यूज करते हैं। आई डिडंट बिकॉज थोड़ा सा ये एडवांस हो जाता है, तो आई डिडंट मेंशन इट इन द लेक्चर। दूसरा किसी ने कहा कि RA पॉजिटिव लास्ट 6 months, I don't understand, लेकिन अगर रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है और पेशेंट सिम्टम्स हैं तो बिल्कुल उसको रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। किसी ने लिखा है कि हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, and they're saying that RA factor and anti-CCP can give false negative. RA factor can be false positive in various, because RA factor can be positive in other diseases as well. But anti-CCP is very specific. ठीक है, एक फिजियोथेरेपिस्ट उन्होंने कहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। आई डिडंट मेंशन इट क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मैनेजमेंट जो है ना, है तो मल्टी डिसिप्लिनरी, बट विद एडवेंट ऑफ द न्यू मेडिकेशंस द डिजीज इज नॉर्मली वेल कंट्रोल्ड। पहले जमाने में बिकॉज डिजीज इतनी अच्छी कंट्रोल नहीं होती थी एंड एवरीवन यूज्ड टू हैव एडवांस डिजीज, तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत ज्यादा था। अभी बिल्कुल रोल है। द प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि इफ वी वांट टू सेंड द पेशेंट टू फिजियोथेरेपिस्ट,
तो पेशेंट जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरेस्टेड नहीं होते, वो कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं है, उधर दोबारा फीस देनी पड़ेगी, बस आप हमारा दवाइयों से इलाज करें, हमारे पास हम बार बार नहीं आ सकते। तो इन ए आइडियल सेटअप definitely I will send my patients to see a physiotherapist and occupational therapist. But in Pakistan, we send patients who are willing and want to go. Like, and we do suggest कि वो physiotherapist को दिखाएं. What you suggest any protocol for tapering steroids in RA patients? There's no particular protocol. आपको देखना होता है. Basically, you will get them into remission first, and then will you start tapering the steroids. तो steroids आप taper करेंगे, लेकिन पहले patients को आप DMARDs पे fully establish करेंगे. Which three combinations can be used? Combination DMARDs तो बहुत सारे हैं, जैसे HCQ है, rheumatoid methotrexate है, sulfasalazine है, इनको यूज कर सकते हैं, और methotrexate, लेफ्लोनामाइड, एक्सिको को यूज कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंट शुड बी फॉलोड अप रेगुलरली। आप किसी को इन सब पे स्टार्ट करके देखें, यू कैन नॉट लीव देम बिकॉज दीज मेडिकेशन कैन लीड टू प्रॉब्लम्स इन द ब्लड काउंट्स एंड द लिवर टेस्ट, तो उनको यू हैव टू मॉनिटर देम क्लोजली। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट दवाइयाँ नहीं लेते। अगर हम डीमार्ट थेरेपी स्टार्ट भी करते हैं कम्बिनेशन, तो वो कहते हैं दवाइयाँ बहुत ज्यादा हैं, तो वो छोड़ देते हैं। कि कुछ कह रहे हैं कि बर्नआउट आ रहे, बिल्कुल बर्नआउट आ रहे एक एंटिटी है which we normally don't see these days, क्योंकि उस स्टेज में हम पहुंचने ही नहीं देते। किसने कहा है कि डोजेस क्या हैं DMARDs की, तो बताना जरा थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इट डिपेंड्स के टॉलरेटेड डोज क्या है। PRP और स्टेम सेल का रोल, there is no established role of PRP or stem cell in rheumatoid arthritis. Pregnancy का पूछ रहे हैं, इसलिए that's very important. Pregnancy जो है, actually most of the patients who have got rheumatoid arthritis, their arthritis improves in pregnancy. और pregnancy में आप methotrexate और leflunomide नहीं दे सकते. Hydroxychloroquine and sulfasalazine are safe in pregnancy, and same goes with the steroids. इम्यूनोथेरेपी का पूछ रहे हैं, तो इम्यूनोथेरेपी आई विल से कि यही जो हमारे पास बायोलॉजिक्स हैं, दीज आर काइंड ऑफ इम्यूनोथेरेपी। कोल्ड कंप्रेशन और वार्म कंप्रेशन, तो डिपेंड करता है, कुछ लोगों को फर्क पड़ता है कोल्ड कंप्रेसर से, कुछ को वार्म से। हाउ लॉन्ग फिजियोथेरेपी इज नीडेड? फिजियोथेरेपिस्ट शुड बी एबल टू टेल बेटर। What are the major systemic findings in patients with RA? I already mentioned that if the disease is uncontrolled, you will have a lot of systemic findings, otherwise you will not find them. किसने लिखा है कि NTCP is the gold standard investigation? Gold standard हम इसको नहीं कहेंगे. It has to be taken in context of the clinical examination and history. But if someone is having particular suggestive history and they have got NTCP positive, then they have got rheumatoid arthritis.